Hello, hi guys, how are you doing? Let's go, let's go. Hello, hi Shaurya, hi Zahid, hi Pushkin, Chesar, all OG members, yeah. I'm gonna put some music. So yes, I came from the tournament. Tournament was overall good. Could be better, but I won two winning games. I lost two winning games. So nothing to be honestly very upset about. So let's go. This is the position, the first position. Yeah, I had a good day. Today's day mostly went in sleeping. And I recorded a video for Chessbase India. Out of nowhere, I recorded a video for Chessbase India today. So that was something. How are you guys doing? How is your day going on? So d5 is played. What do you do now? ed6? Queen d6 has to be played. What else? And then knight c4 attacking the queen. And queen d7 has to be played. So I'm calculating ed6, queen d6, knight c4, queen d7, and then rook d1 attacking the queen. So I think that should be it. Queen d7, but now I have queen f3 attacking the knight, and I can take the rook. Should be it, right? Chalo, fantastic. Do you want to see the games I played in the tournament? We can do that. Okay, I remember this puzzle. I have solved this way long back. You love to analyze it. Okay, let me set it up. Is the music fine? Should I keep the music? Hello. Wow, there are just dog. Okay, music is good. So let's go. So the tournament started like this. This was my first round. Let me set it up. This is the first round I played against need to do like this. Okay, so the rapid tournament I played, right? And this was the first round against Arush Katti. I was playing black. He is just a beginner, so e4 he started. I played c5.
My opponent played c3 here. Knight f6, e5, this Sicilian happened. Text. I need to change the name of the name of the no, PR Datta. This is not PR Datta. PR Datta, I want to do it actually someday. But PR Datta, I came from Grenke. I was so tired in the event. So CD4. How do I change this? Just a second, guys. I'm just changing the name of the stream. I can do it live, right? Yeah, I can do it. So this is it. This is my chess base. But I can give you till then some puzzles to do. But okay, the first game I played, I just won very easily. So there was nothing in this game. Can I change the name? I'm not so sure. I need to check. Yeah, here we go. Okay. There we go. I think now this would have been changed. But this was the first game. I was playing black. It started with Sicilian. Usually, as you know, I always play the Caro Khan, but since this was the first round, I decided, okay, let's play the Sicilian. Why not? C3, knight f6, attacking his pawn on e4. He played e5, which is the main move, by the way. I played knight d5, d4 happened, e6, knight f3, I took, d6. Bishop d3, knight c6, knight c3, knight c3, b c3, d takes d5, queen a5. And I'm attacking the pawn and this e5 pawn as well. So the first game was honestly nothing serious. Rook f8, rook here, check, took, this, and I won the game. The second game was against Khatri Chirag. I was playing white again. Let me just ask, like, if Nikhil can join. Okay, so this was the second game. I'm again playing white here. And it started with, hi Savitha. Mr. Grind, Srinu bhai, how are you doing? By night grind, हो मी टुर्नामेंट खेळलो काल आणि didn't went. Hello Akshach. It went good in a sense ki I was winning, but I was not able to convert. We will see how the disaster happened. What disaster happened? I came 9th or 7th, but I was happy with the event because the game I lost, I was completely winning.
Akshay, you played yesterday. Why didn't you meet me? How much point? Okay, let me show you what happened. So this was the event. And in the final ranking, I was like in the prize funny. And I came 13th. Okay, I tied for 10th. Aniruddha is below me, so that's a good news. But yes, the thing is, I won this event the previous time, so I really wanted to win this event this time. And yes, what happened was, you can see, I think I decreased my rating, my 9 points. I won first 3 games here, and then 4th game I blundered my queen. I was completely winning. This I won, this I won, this I won, this I won against Nikhil, which was a very crazy game. And last game I was like 5 pawns off. And yeah, that was very sad. So let me take you through the games. Okay, so this is the second game basically against Khatri Chirag. I am playing white. Okay, we will add the engine, why not? Shino bhai. Also, my very happy news, guys. My channel got this thing monetized. So the super chats and everything would come. And then I applied for monetization, and they say it will take 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks. So against Khatri Chirag, it started with d4, c4 I played, knight f3, I stopped e5, knight d7, knight c3, e5, e4, bishop e7, bishop e2, all natural, c6, castles, and then bishop e3 happened. So very natural move, queen c7, rook c1, queen here, d5, a5, knight d2, knight c5, b3, bishop d7, a3, cd5 was a big mistake. I was going to play yesterday, it's way too away in Wakar. Bro, you should play. What are you doing? Wakar is not so far. I came from all the way from Nagar. And bad news was I left very late from Nagar. And I was not able to sleep, so I was sleeping during the rounds, which was the big issue actually. So lesson learned, try to go early. cd5 happened, queen b8 and b4. This game was, again, I don't think anything special happened. I managed to win this very easily. I take here and I won the game. Nothing special. Against Uttam Prakash, also a very easy win. No, I am not playing 8 into 8. I won the exchange, and at this point I think it was very nice move, h6 and then e5 and then rook d5 and take, bishop d2, and then I won the game. And this game I lost. This was like very smooth spoiler for me, because I played such a good game, and then oh, you saw this game live. You must have saw my emotion. Yeah, I was shocked after losing this game, because like I was winning from the, we will see against Pratik. So it started with d4. I blundered the queen in this game, blundered the whole queen. I don't know when that has happened.
blundering a whole queen. I mean, it's expected from my good friend Shinu, but here I hope he's not watching. But okay, and okay, let's see the game. Okay, he started with d4, knight f6, c4, e6, and he played knight f3. Uh, Knight c3 is another move. Knight f3 happened, d5, knight c3, and dc4 I played. This is one of the moves which I had prepared way long back, and the game goes very aggressive after dc4. White has to know what he is doing. The main move is e4, and then I had prepared bishop b4. This is called the Vienna. Also b5 I do play from time to time. But okay, in the game what happened was he played, what is this? Why I'm not able to make the moves? By chess base half of the time doesn't work. I'm gonna end chess base for now. Restart the chess base again. And this is the game, Abhishek Kelkar. There we go. Hi Siddhant. Siddhant and Yashini. Oh, this is Siddhant. How are you doing? You also have a channel. Okay, Siddhant, I have promoted you to the mod. Siddhant is full professional channel, huh? Guys, he is my student. How is your practice going on? How is your tournament? Are you working on tactics? I told you to. Okay, so game starts with this. It happened like this. Okay, you're working now. A6. Idea is to play b5 here. Which endgame book are you reading? e4. I played h6. Bishop h4. And now guys, the question is, would you play the move b5 here, or would you play the move g5? So this is the question. One is good move, one is bad moves, and you need to calculate. Yeah, okay, fantastic. So the Siddhant, the question is, would you play here g5 or b5? During the game, I remember I spent a lot of time here deciding what to do. It was a 10-minute game, and then I played g5. That's what I did. Okay, let's see. So in the game I played g5, which is a fine move, but b5, I was afraid of e5 during the game.
and then g5, let's say attacking the bishop, and after g5 he has to take knight into g5. I will play h into g5 attacking the bishop again. Bishop into g5 has to be played. And now I was very afraid of what's happening. Like, okay, I can play bishop e7. He will play e into f6. I will play bishop into f6. Hi Swift, how are you doing? Yeah, the tournament I already showed. It was overall decent. Like, this was my performance. I won 4, then I lost this game. So we will analyze the lost games. I won these very important games. But the thing I'm not like so unhappy is because this game I was completely winning. I outplayed my opponent from the beginning. And also the last critical game, again I was also completely winning. And my friend Vedant has given a very good advice that this kind of game you should give it a pass. It shouldn't bother you that much. Because if this happens in a classical chess, I will win 99% of the time who is my opponent. Doesn't matter who my opponent is. So you should give it a pass instead of getting angry. And just move on. What else can we do? Yeah, Vedant Bane sir. And for Vedant, his coach has given him that advice that you should give this game as a pass, because I mean, during the game I was afraid of this, like queen f3 he can play, and after queen f3 he is attacking my bishop and my rook, and I was not so sure here. I can take here, he can take here, I can take here. The idea is queen d2 check. Hello, hi guys, hi chess freak, hi project. Bro, I got 10th out of 100 in Chennai. Thanks to advice. Also, you said not to respond on that. I played with confidence this time. Wow, congrats. Yeah, that's one very important mindset. You should never respect your opponent. Not in a sense ki you should. On a chessboard, queen into d4. Idea was queen d2 mate, and then he can play rook d1 attacking my queen here. And if I move my queen back, he will play this move. I was not so sure about this during the game. Hence, what I did was I played the move g5 here, attacking his bishop. He played bishop g3, and then I played b5, defending the pawn. He played h4, attacking my pawn. I played g4, attacking the knight. Knight e5 happened with the idea to play knight into g4. Rook g1. What benefit? I mean, honestly, I just do it because it's one-time payment, and I like ChessBase has made me, to be honest, that like ChessBase is one of the software which you should absolutely buy. I feel like you can always get pirated one, but honestly, the company itself is giving you one-time purchase, and it's a gold standard. You don't need that much of an investment in chess. So from that time, I almost have every ChessBase. Like from 16, 17, 18, from 13th I have 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 26. So I always buy ChessBase. Thank you, Chess Freak. And then h5 he played. Okay, here I was confused, like should I play b4 here during the game, but b4 I thought he will play Siddhant. Yeah, I wanted to stream Freestyle Friday, but what happened is they have came up with this Proctor, and half of the time it doesn't work.
like this thing, it never works. So it comes like this. It goes setting up the proctor session. And now it will work. Yeah, now it will work. Yesterday when I wanted to stream, it will never work. But now when I'm not, doesn't want to do anything with it, it will work. That's how the life is. This is what chess.com is doing, yeah. And then I started doing proctor, and then it was not, and then I missed my first round, so I didn't stream. But I will stream tomorrow, Title Tuesday. That's what I will do. I hope you will join, guys. Title Tuesday. It would be fun. Fun to stream. Should I practice on wooden? For now, just practice on mat. No need for wooden chess set. Unless and until you regularly play on wooden board. But I recently brought wooden chess board. Because it's good, like it's fun. And what happened in the game was, he played knight e5 attacking my g4 pawn. I defended it by playing rook g8. Very natural move. Very natural move. And then h5 happened. h5, the idea is to play bishop to h4. I played bishop b7 attacking the e4 pawn. He played bishop h4, bishop e7. f3 happened. I played knight bd7. He took, I took, and here he went bishop to f2. Yeah, exactly. Y-band fun. And I took, and I went bishop g5 here. Queen c2, queen e7, a4 c6, rook g1, and long castle. Take, bishop e2, bishop h4, take, here. Okay, so this is another question for you guys. What would you do here? Let's say if you can play better than me. Queen f2, it's your turn. What would you do here? Yeah, chess freak. It was very sad, you know, like I was so upset. Like the game beside me, which was happening between Akshay Borgaonkar and some random GM, he told me, you know, like during the game, please, you are disturbing me, please don't do like this. I said sorry. Like I was so upset with that game. Actually, because it's like one of a kind game which I will always win. And then I would have probably came second or third or fourth. Probably I would have came the fourth, most probably, or second. So I would have tied for this. So the main question is, what would you do? Should you exchange the queens or not? Like exchange, basically that's important. Exchange or no exchange. Okay, I want to get your answer. Let's see. I've created a poll. Can you see the poll, guys, or no? No?
I mean, this was the most critical moment from the game. So we have so many votes, 9 votes. No exchange of queens, you guys are saying, yeah? Most of you. And that's what I did as well. Like during the game I thought you shouldn't exchange. But the real thing is, now I understand, is I should have exchanged the queens with queen into f2. It would have been the best move. I will tell you why. We will see why. How do I but I don't know how do I do that. Maybe here. Properties. Because the thing is I'm streaming on different monitor. What is this, bhai? I don't know how to do that. It's like full brightness. How do I even do that? Maybe from this way? Coca-Cola is bad for health. You should never drink Coca-Cola. Especially Coca-Cola Zero. Someone told me that. Is what it was you only, no? I assume. No, I mean the screen, that's the best screen I got somehow. Yeah, yesterday I was drinking Coca-Cola apparently. But you should not do it. So the thing, we will first see the game. In the game I played this, and probably one of the biggest mistake. What I should do was I should have exchanged the queens, king f2. And then during the game itself, what I was thinking was I should have played the move knight f6 here. The idea is simple for now. I'm threatening to capture knight into h5. And I am literally having risk-free position here. Like even if you want to lose this position, even if I want to lose this position, I won't lose this position. And this is what I was thinking after the game. Like, what will you do here? Bishop e2, if you play, I will take this. And this is what usually happens. You get this kind of idea after the game. And I can take this. I'm pawn up, very good position, and yes, impossible to lose. But in the game what I did was I thought, okay, let's maintain the king queen into h5 and play this. And now what happened was the game became double-edged. I mean, I can lose this game. Basically I can lose this. If I don't play it correctly, I will lose this. But queen into f2, I will never lose this. So this kind of decisions are very, very important in my opinion. Like if the game is getting just two-sided, that here I can only win the game or it's going to be draw, you should go here. Queen h5, like I felt this, that I might lose this during the game. But I thought if I maintain the queen, I will win the game much earlier. That I will win the game faster. That's what I thought. And this was the biggest error in my life.
which costed me this game, and yeah, I mean, every game makes you a good player. What else? Because here, yes, it's so sad that how, like, even if Magnus is playing against me, mostly he will get a draw, like if he defends very well. But if queen h5 was such a bad practical decision, and probably because of which I lost the game. Now we will see what happened. Okay, I played here queen into h5. No, this was not the last round, this is the fourth round. So he played long castle, I played here, and now if you see, the already game is getting trickier. He's already threatening d5. Although I'm pawn up, but game is already very tricky. Here I wanted to play this b4, but here he has knight a2, and I wanted to play this, but then he can just take my pawn. So I cannot do that. So I played check, simple check, king goes, and I played h5. So there is this rule, passer pawn should be pushed. And here what I thought was, if he plays d5, I can play e5. And e5 is already a huge mistake. I missed this move. After e5, what will you do here as white, guys? Can you suggest? This is the move which I missed during the game, after d5, e5. That's why I wanted queen g3. Okay, so you're not taking the pawn. But I'm not so sure. You should just exchange the queens, go knight f6 and just take the pawn. Yeah, bishop h3 actually. Very good, guys. Just bishop h3, and if I lose my knight, his queen is going to penetrate and I will lose the game. So this is what happened. And like, I was already very annoyed when he played d5 move, and I thought, oh, if bishop h3 is there, I'm under time pressure. Okay, I played queen f4 here, panicky move. And here already, I think, like, during the game, not during the game, but when I was in my cab while coming home, I was thinking about this. And then he has f4. He didn't play this move, but f4 was very strong for him. If he goes this, then maybe he can take or even push it. And he took here d6, fe6, and here he played bishop h3. And now I played king c7, and now white to play. Here he found this very nice move. Can you find it? White to play. What would you do? He has 1 minute. We both have 1 minute on the clock at this point. The game is super critical. If you play a bad move here, you are going to suffer. You are going to lose the game. So how will you continue here as white? White to play. Yes, I mean, king c7, he has f4. Very strong move. And now I'm not able to play this move because of this. And if I play bishop e4 check, he has this. And then my bishop is lost. But again, here my opponent didn't did that. Instead, what he did here was, yeah, f4 is correct, guys. Here he played queen d2, attacking my knight. And now again,
if I go knight c5, here he has f4 again. And if I go bishop e4 check, he has king h2. And this is again lost. So I played rook d8 here. Here he played queen h6. And now at this point we both are under super time pressure. And here I played b4 attacking the knight. He played rook a2. Knight a2, sorry. Attacking my pawn. After knight a2, what will you do? I think this is one of the most critical move. Then I need to calculate it out. Yeah, it's coming. The climax is coming. Does it? Bishop e4 check, f into e4, queen into e4 check. King goes somewhere. Knight c5, no? Idea is this mate. Or let's see if he was here. Knight c5, you think? I think you will play. And now this check, most probably. King moves. And then he takes my rook. And this is not good, yeah? I don't think this will work. Check, king d1. Queen check, king here. Queen cannot even take here because of this. So that's the issue. Like I can play b4, knight a2. gf6, bishop d4. Bishop e4, f4 followed by knight c5. Yeah, that's what I'm thinking as well. Bishop e4, fe4, queen e4, king here, knight c5. But I think he will do the same thing. Now start with c6, then bishop c3, you mean. c6 is not coming now at all. But okay, what happened was I played b4, knight a2, b3, knight c3 happened, and here I played a blunder, queen f6. Can you spot a win for black? Yeah, fuck happened here. And at this point he almost jumped, you know, like when I played queen f6, he jumped and played this move. Like he can normally play it, but he jumped literally from his chair. And yeah, I lost this. Just one more error and chess is brutal, yeah.
So that's how I lost this game. Yes, I did have played Aranya Ghosh. I have won against him. No, 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 I'm just kidding, guys. He's very good coach. He's a very good friend of mine as well. And very serious player. He was someone who I used to look up to in my younger days. And he's a very good coach, to be honest. Yeah, but yeah, whatever. I mean, if you think of in a way that he was losing most of the time, and then suddenly this happened, so he got excited. Um, so d5 happened, knight c3, dc4, e4. E4 is the main line. He played this move, and after bishop g5, a6 I played, e4 played. Oh, engine is saying b5. Really? And after e5. Okay, guys, I'll share the engine with you. And after e5, h6, bishop goes to h4, g5, but knight g into g5, h into g5. Okay, bishop into g5, bishop e7. I saw this, but what about ef6? Bishop f6, queen f3. How is this good for black? Queen into here, queen into d4. I saw this. Queen b6. And I thought this position is good for white. I don't have any GM norms. I was out of the prep when he played bg5. But guys, what do you think? Like, engine says it's good for black, but during the game, what would you think? How do we evaluate this kind of positions? It's very hard. First and foremost, we are exchange down. Our king is weak. White has very clear plan to play bishop e2 castle. Like bishop e2, c6. No way. Yeah, this could go either way. Even in classical chess, this is so hard. Like, the thing is, what I played here, h6 is a bad move. After h6, engine is giving white is 0.80. 0.80? Seriously? Bishop f6. How can this be 0.80? Bishop into c4. It's just a normal Ragozin kind of position. I can play this move. Castles. And this looks equal now, to be honest. But 0.80, it's very crazy. Queen e7 if I play. Rook c1. Okay, I play castle. a3. Why not? Bishop a5. Bishop a2. Rook d8. Okay, fair enough. This game has made me so sad that I'm going to declare the winner of the copyright this thing today. I'm going to go through all the chats today of the giveaway. And the one comment which makes me feel good, I will give them the course. Okay, rook g8, h5, bishop b7. So stay with me, guys. Once we analyze this, we are going to declare the winner of the giveaway. So knight d7, queen d7. So there is this course by Niranjan Navalgun, how to beat a grandmaster, and we have a giveaway basically. The giveaway is usually chess players get demotivated, right? So what we thought was we will create this giveaway where how will you motivate someone who is going through these times, yeah? And then the best answer basically will win. But the point was, like, if you feel bad, then you can come to the course and watch the comments basically.
so you will feel better. So currently I'm feeling kind of bad, so I will watch it, and the one which makes me feel good, I will declare it as a giveaway winner. So if you haven't commented yet, do comment. I mean, so what I was saying, yeah, this, yeah. See, like I'm 0.80 better, but here it was very surprising that, yeah, of course, many use ChatGPT, but it's very easy to find, yeah, which ones use ChatGPT, which one didn't use ChatGPT. We are smart that way. This happened. Bishop h4, queen h4 happened, queen f2, and here was the critic. Yeah, see guys, queen f2 is the move. Whoever's 90% of you guys said don't exchange the queens. You also played like me. 90% of you guys said you should not exchange the queen g5 was one of the persons. But queen g5 is so hard to play. Why would you play queen g5, not exchange the queens? But the lesson from this game is very important. You should exchange the queens and go to the endgame when your king is weak, first and foremost. My king is weak compared to his king. Secondly, I am a pawn up, so just exchange the queens. And here queen g3, terrorize him exchanging the queens. I played h5 here, d5 happened. Yeah, just exchange the queens and play like Magnus. Queen g3 was very hard. Honestly, queen g3, if I played queen queen here, wow. Exchange the queens. Engine is literally terrorizing the opponent with exchanges of the queen. And this was a blunder, and f4, very good spot, guys. And knight c5 here was a good move. After check, king c8. And yes, rook d8, king d8, queen f7, b4. In the tournament, something also very funny happened, you know. There was this child who came for autograph after the tournament was over, and I gave him the autograph, and then he went and he came back again and he said, sir, what's your name? Please write your name also. Never been this humbled. I literally have to write my name. But yeah, children these days are danger way. And then this bishop e4, p3. Kid was not trolling, honestly. He was just genuine kid. It was so funny, like imagine I blundered the last round. I played the round. Whatever, yeah. Nagas 2 GM in process. Rook into d1, knight into d1. Okay, so here bishop into e4 is strong move. So tactics we need to work on. Queen e4, king here, we have knight c5. How is this winning? Oh god. And we can just go to the end game basically. And we are like so many pawns up, we are winning the game. Fair enough, yeah. So whoever said bishop e4, nice. I didn't spot this. I played a horrible move, b3. b3 you should cut your hands. If I said this, I played b3 to Ramesh sir, he will cut my hands because it's so bad. This knight comes to the play again. This knight is bad. Even a5 would have been better. Of course a5 would have been better. b3 basically invites this knight to the party.
I should have just maintained the tension, maintained the pressure, or even c3 was a good move. Best was going to this, just go with it. If you lose, what else? And if this happens, queen e1 is mate. Even this is good for me. Wow, my position is so good that even losing 2 pieces is good. So okay, that's how I lost. A very well played game, but this decision was very important to exchange the queens. And secondly, in the opening I think I played good. Hi Anirudh, how are you doing? Guys, how many of you are Marathi here? I just today recorded a video in Marathi for Chessways India Marathi channel. Chess Freak, you are Marathi? Pasta, you are Marathi? Here's the I am. So this, bishop b7. Aniruddha, how was your tournament? Tamil. You're welcome, Anirudh. This. भाई मी मराठीमध्ये कॉमेंट्री अशी केली आहे ना फनी. सर्वात पहिले मी मराठीमध्ये कशी स्टार्ट कसं केलं तर कॉमेंट्री. माझ्याकडे रेकॉर्डिंग पण असेल ॲक्च्युली, बट तर आज आपण गेम बघणार आहोत टोपोलोव वर्सेस एल्डॉर्मस भाऊचा. हे असं स्टार्ट केलं मी मराठीमध्ये. तर आज आपण गेम बघणार आहोत टोपोलोव आणि एल्डॉर्मस भाऊचा. मी बोललो भाई फर्स्ट टाइम करतोय, नीट करू. मग मी चेंज केली. तर चेंज केली मी आणि स्टार्ट केलं. स्टार्ट कसं केलं, एकदम प्रोफेशनली स्टार्ट केलं मी. तर सर्व प्रेक्षक मित्रकांनो, आज आपण गेम बघणार आहोत टोपोलोव सर आणि एल्डॉर्मसचा. बट ठीक आहे भाई. आणि आय लॉस्ट दिस गेम भाई, आय लॉस्ट दिस गेम. And then after losing this game, we move on with life. Then I won next to, it will be published. Anirudh bhai कधी publish होणार आहे तो व्हिडिओ? Ask Anirudh. It will be published on my channel as well in Marathi. तर अनिरुद्ध भाई जीत शाह आहे का भाई? जीत शाहला कॉल करा ना. जीत शाहचा गेम ॲनालिसिस करतोय मी. पब्लिश्ड ऑलरेडी. लेट्स गो. लेट मी सी. भाई पप्पा तुझे सुपर फास्ट आहे. हा भाई पप्पांना सांग ना भाई हे कोलॅब रिक्वेस्ट पाठवायला. अनिरुद्ध भाई हे माझ्या चॅनलवर पण दिसेल. भाई बघा हे. ठीक आहे भाई. मी लिटरली स्टार्टिंग व्हिडिओची अशी केली की तर आज गेम आपण
टोपोलो आणि एल्डॉमस भाऊचा बघणार आहोत. नमस्कार प्रेक्षक मित्रांनो, माझं नाव आय एम सुयोग वाघ आहे आणि मी आजच्या 5th राऊंडच्या गेमवर कॉमेंट्री करणार आहे. आपण पाहत आहोत ऑलरेडी एल्डॉमस आणि टोपोलो दोघं आले, त्यांनी हात मिळवला. टोपोलो सर बसलेत आणि तिथंच ॲडजस्ट करतायत स्टार्ट होण्याच्या आधी. आतापर्यंत एल्डॉमसचा परफॉर्मन्स खूप मस्त राहिला आहे आणि हा माझा फेवरेट गेम आहे ह्या टुर्नामेंटचा, कारण की ब्लॅकने जी ओपनिंग खेळली आहे कारोकान, ती माझी फेवरेट ओपनिंग आहे. आणि आपण काही वेळ वाट पाहतोय टुर्नामेंट स्टार्ट होण्याच्या आधी. खूप फ्रेंडली ॲटमॉस्फिअर आहे. जेव्हाही गेम स्टार्ट होतो त्यावेळी एल्डॉमस इज अ किलर. टोपोलो तिथेच ॲडजस्ट करतो आहे आणि त्यांनी गेस्टला सांगितलं काय खेळायचं आणि टोपोलो ॲज ऑलवेज E4 खेळतो आणि तो काहीतरी विचारतो शुड बी स्टार्ट. टोपोलो व्हेरी रिॲक्टिव्ह प्लेअर आहे आणि E4 आणि हिअर द गेम स्टार्ट्स. टोपोलोने मूव खेळली, क्लॉक दाबलो. E4 C6 कारोकान, वन ऑफ माय फेवरेट ओपनिंग झाली आहे गेममध्ये बाय कलर ग्रेडिंगची. तर बट ठीक आहे. आफ्टर C6 टोपोलो ऑलरेडी विचार करत आहे इथे आणि C6ला टोपोलो D4 खेळला. ब्लॅक D5 खेळतोय मेन लाईन आणि आता मला पाहिजे की तो ॲडव्हान्स खेळतो की ओके ॲडव्हान्स. वन ऑफ द मोस्ट फाइटिंग. भाई मेरा ही आवाज है, कॉपीराइट कैसे आएगा? इथे आपण मैं ही कर दूंगा कॉपीराइट. जे पण एक व्हेरिएशन आहे. व्हाईट ब्लॅक व्हाईट इथे नाईट F3. टोपोलोला टोपी द्या भाई. नाईट भाई वर्ल्ड चॅम्पियन आहे भाई, रिस्पेक्ट करा. काय E6 बिशप E2 झालंय. A6 आणि ही ऑलरेडी नवीन मूव गेममध्ये खेळली गेली आहे. E5 युजली A6 युजली नाही खेळत. कॅसल्स मेन लाईन आणि C5. इथं तुम्ही पाहू शकता टोपोलो ऑलरेडी खूप विचार केला त्यांनी. बिशप E3 भाई कमेंट काय टाकू आणि एल्डॉमस ह्या टुर्नामेंटसाठी खूप जास्तच प्रिपेअर्ड आहे. C into D4 नाइट into D4. भाई कमेंट क्या डालू भाई? बिशपवर अटॅक, तर बिशप डिफेंड करावं लागेल. तर नाईट E7 खेळलाय आणि आता नाईट इंटू F5 मारलं तर नाईट इंटू F5 F4 इमिजिएटली खेळलं गेलं आहे. F4 नंतर H5. F4ची आयडिया होती व्हाईटला G4 खेळायचं होतं, तर त्यासाठी H5 नाईट D2. खूप सॉलिड आहे. व्हाईटची पोझिशन स्लाइटली बेटर आहे भाई. असं झालं भाई, हे बघा भाई तुम्ही आपल्या टाईममध्ये भाई. बट दॅट वॉज द गेम अँड देन नाव वी आर अनालायझिंग द गेम बिटवीन Sahajit and let's see. So D4 F5. During the game itself I was very surprised by F5 because he never plays F5 and out of nowhere he played the move F5. Out of literally nowhere. भाई कॉपीराइट इतने आने वाले हैं चैनल पे कि बैन ही हो जाएगा ऐसा किया तो भाई. Yo, hello guys. Oh, literally someone. चैनल बैन तो नहीं होगा ना मैंने ऐसे गाने लगाया तो? हो गया तो हो गया, क्या ही होगा. ठीक है. नहीं रे पण का. ठीक है चलो भाई नेक्स्ट गेम. भाई कॉपीराइट के वो पहले धमकी देंगे ना लिटरली, ऐसा बोलेंगे ना वो कि
यू हैव टू रिमूव दिस बिफोर दिस, या डायरेक्ट कॉपीराइट टेंशन आ जाएगा. लेकिन एक गरीब को कौन ही करेगा रे कॉपीराइट. क्या करते हैं लोग भाई. चेस बेस इंडिया मराठी ना कर दे भाई. मैं ओके स्ट्राइक तो नहीं आएगी, कॉपीराइट क्लेम आएगा, फिर उसके बाद डिलीट करने का. और फिर भाई गाना गया भाड़ में. हाँ ना भाई. F5 is very surprising भाई Anirudh. Actually, your friend played F5 भाई. Could you ask him to come भाई? Could you call him and ask him to come in chat? First question I wanted to ask is, अरे if not earning then no copyright. चलो भाई चलो. We will play some very calm music भाई. And then we will declare the winner today guys. If you haven't commented on the course, do it. इतना प्रमोट करो वो कोर्स. खुद का कोर्स भी नहीं है वो, बट इट्स अ वेरी गुड कोर्स. दैट्स वन थिंग. बट मैं खुद ने एक कोर्स बनाना चाहिए यार. आइडिया तो है मेरे दिमाग में क्या बनाना है. बेसिकली आइडिया ऐसी है कोर्स की कि अभी तक मेरे जितने भी ग्रैंड मास्टर लेसन्स हो गए, तो मैंने सब ऑलमोस्ट सब ग्रैंड मास्टर लेसन्स रिकॉर्ड किए हैं. तो बेसिकली वही कोर्स वही मैं कोर्स में ये करूँगा भाई. जीत आ रहा है नहीं आ रहा है. ओ जीत भाई इज यार भाई. रियली अनिरुद्ध सजेस्टेड हिम. सीरियसली अनिरुद्ध. सो गाइज माई ओपोनेंट इज इन द चैट. Out of nowhere my opponent is in the chat. Big respect to Jeet bhai for coming. Jeet bhai will not come on stream most probably, or if he is interested would he. But let's say Jeet bhai played F5, so now I was thinking what should I do already. I was thinking of going G3, but Jeet bhai mostly would have prepared. Were you going to go for this Jeet bhai? या E6 क्लासिकल स्लाव. भाई यार एक सेकेंड, पीसी ओवर हीटिंग इशू हो रहा है भाई. चेस बस बंद करना पड़ेगा भाई. भाई मेरा वॉलपेपर देखो भाई. जस्ट एंजॉय चेस. सो D4 F5 G3 E6. ये ओस्मानी भाई और इनका क्या चालू है भाई. प्रोजेक्ट भाई का अलग ही चालू है कुछ तो. सो व्हाट्स द बीफ भाई तुम दोनों में. भाई वुड यू प्लीज भाई. आई वुड मेक द वीडियो ऑन माई फॉर माई इंस्टा. तो बेसिकली उन्होंने सेंड किया है मुझे. तो सबसे पहले मैं ऑनेस्टली देखूंगा बोर्ड अच्छा है ही नहीं है. बोर्ड अच्छा होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा. बोर्ड अच्छा नहीं होगा तो आई वोंट मेक अ वीडियो. आई वोंट प्रमोट द प्रोडक्ट. तो इंस्टा पे ये कर लो भाई. इनसाइड जो भाई हमें भी बता दो भाई. सो D4 F5 जीत भाई प्लेड आउट ऑफ नोवेयर. आई प्लेड नाइट C3. Idea is to go E4, knight F6, and here the main move is basically bishop G5. That's what I know. And then they play D5, and then you take here. You take with the pawn. Yeah, Jobava, and then E3, and
something like this. You play e3, bishop e6, bishop d3, knight c6, queen f3, attacking the f5 pawn, queen d7, a3, idea knight b4 and long and usually you get this position. तो बेसिकली मैंने बोला कि बिशप f4 ही खेल, लाइक बेसिकली d5 पे बिशप f4 होता है, तो मैंने बोला नाइट f6 पे भी बिशप f4 ही खेल दो, क्या ही होगा, जीत भाई भी यही खेलेंगे, d5 और ट्रांसपोज हो जाएगा गेम. लेकिन यही तो इशू हो गया, वो खेले ही नहीं भाई, d5 e6 ही आ गया, e3 एंड अभी बिशप b4 एंड ऑलरेडी आई थिंक ब्लैक इज बेटर हियर आफ्टर बिशप b4. तो आफ्टर बिशप b4 what do I do? Like knight d5 is coming, if I play a3 will take and then go knight d5. Bishop d3 happened, bishop into c3, pawn into c3. पता नहीं भाई स्ट्रीम का क्या करना है. Knight castles here he played. Okay, I was expecting knight d5 here, c4, knight into f4, into f4. Yeah, it's already very solid. I think this is already slightly better for you after playing bishop b4. I think against Dutch, the best repertoire in my opinion is this move, bishop g5. Then they go h6. What do you think, Jeet bhai? Against Dutch, what's the best opening repertoire? This is good, but again, against this position also, you have to know what you are doing. So after d4 f5, c4 is also one of the ways to play, but okay, I played knight c3, idea e4, this, and here bishop b4 was very nice. Black is already better, slightly better. I prefer black. It's a fine opening. I mean, I got almost losing position out of the opening. This knight e4 happened, attacking the c3 pawn, and here I really want to play the move f3, guys. So what do you think? Is f3 a good move or not? So मैंने यहाँ पे सब, like I spent lot of time here. Should I play f3 or not? I think c4, g3, bg2, knight c3. So main line, yeah, basically. g3, bg2. So okay, we will go with the game. So what happened was, we are at this point, and here my opponent played knight e4, and here I'm thinking, should I play f3 or not? But f3 is a big mistake. Jeet bhai, did you saw this, like f3? f3 knight d2 is Anirudh, nahi, f3 knight d2 queen d2 e5 bg3. I think white would be doing good there. So f3, question is, should you play f3 or not? Come on guys, fast, it's a rapid game bhai. Bolo bhai, jaldi jaldi. सोना है भाई, पूरा दिन वेस्ट करके सोने में जो मजा है. f3. Oh, if you would have played knight d2, I would have went for f3. e5, this e4, and here I don't know. I can even take bishop e4, rook f4 maybe.
and then rubble the rook. By yes, Frinky, yeah, excellent. Knight e4, f3, and the knight c2, and I thought queen c2, the knight is trapped, and I was very happy that okay, this is working for me. And then he has e5. This is so sad. If I take this, he will take this, and play queen e3 check. If I move my bishop, ed4 he will play, ed4, and then he will go knight e2 check. Oh wait, but I have bishop e2. Queen e2, and the queen is trapped. Shit. So I could have played f3 here. Because this is not working, no? Queen check, I have this. Yeah, I was so wrong. Yeah, just getting humbled daily. No, bhai, I'm not ignoring chat. I'm just... Arey yaar. Did you saw this, Jeet bhai? That your queen is getting trapped? Oh, Jose Martin is playing in Odisha. I have played against him once. I have lost. Okay, I missed this. So probably I should have played f3 here. But okay, I played bishop into e4, and this is already very bad. Fe4, I played queen g4. My initial idea was to play queen c2 attacking the e4 pawn. But I thought queen f7 he will play, knight e4, queen g6 he will play, and after f3 he will play d5. So I didn't went here. Queen g4 I played, creating pressure. He played knight d7. I played bg5. Point being knight f6 runs into this. So he played queen f7. And after queen f7, I really wanted to play f4, but he will just take. So then I played bishop h4, queen f5, queen into f5, g into f5, and black is already slightly better here. I knew it. This g5 was again very strong move. Kudos to my opponent for finding all of this. h4, f4, and this. So basically the thing was, at this point I was going to play f4, but if I play f4, this position is almost impossible for white to even think about winning. He will play this, then knight will come to f6 and go g4. So I played bg3 and I went here, and now the position is at least bit complex. At least some complexity is there. He played f3, I played rook e3, knight f6 happened. I took here, and black is already better. I took here, this d5 happened. He went this check, bishop g3, b5. I took, he took, and of course if I take here, he will take with the king, and even black can take over the initiative here. After knight d5, knight can come to c3, b5 can happen. So rook b1, a6. Have you played Srijit Paul? Unfortunately, I have never played him. Yeah, Odisha is my favorite place. By giveaway we are doing this rook, and here this happened, rook here, and if it takes, I take the bishop. That's the whole point. Here he went knight c5, I missed this. Rook b4, this, rook e2. I don't know, like at one point what he should have done was maybe just bishop a8. That's what I was thinking of during the game. And if you take here, if I take here, he has this move. Knight g5 runs to king g6, and for knight d4, a b5. Knight b5 runs to this. Let's see. This should be still better for black somehow.
and then we went here, and here I didn't like this decision of c6 because I just won a free pawn. Instead the best move would have been, I don't know, rook c6, something like this. This. Okay, the game is wrong, and the later it was very unusual. Like the game in time pressure, it was easier for me to play because of pawn up. But yeah, the opening I need to check, like knight c3, what should we do? So we will turn on the engine. By the way guys, there is this feature called as a cloud. Since you are here, we will actually use a stronger engine since my opponent is here. And here basically you can rent a stronger engine. That's what many professional players do. Here we type in the ducats, okay, and basically now if you see, it's a much more stronger engine. So I just rented an engine here. भाई कभी कोलकाता भी आओ वापस से, लास्ट 20 आए थे। नहीं भाई, कोलकाता आई केम वेरी रिसेंटली, 2025 में आया था मैं, एंड आई वेंट टू दैट पैलेस ऑल्सो, एंड आई ट्राइड द फेमस बिरयानी ऑल्सो. I think Jeet lost on time later. Yeah, Jeet actually lost on time. The position was equal throughout the game. But yes, d4, knight f6, this, bishop f. What should you do? Bishop f4? Actually, bishop f4 is like engine's first move. Sometimes even the bad moves are good move. What is your leech's ID? Suyu28. Okay, e6 and g4. What the hell is this? Local engine, yeah, but usually it gives a very correct evaluation if you rent out the engine. I came for my US visa actually. Okay, g4 is nice, na? So we will just some ducats, 0.7 ducats. Suyu 28. So g4. So we learned something here. Jeet bhai, did you know this move g4? Okay bhai. Okay, first is if we go knight into g4, what's the point? We go e4 here. He cannot take because I take the knight, of course. Let me see from the black side. g4, how will you react? First of all, knight g4 comes to the mind, and let's say e4 now. If knight goes back, e5. If knight goes to e4, knight e4, f e4, queen g4, and white is better. So for g4, if f g4, there is h3. Wow, what is this? It looks very interesting. Oh really? Sammed is crazy guy, he will do this without hesitation. So basically, and if h, like, and we just sacrifice and just gain the center. Very interesting move.
Okay, it's engine's top move. Let's see who guys are playing. We'll go here. And all are playing Untitled Tuesday. And white is better. Okay, fine, fair enough, yeah. So this happened. फ्रेंच के अगेंस्ट क्या खेलना है? एडवांस. Knight e4. And what should I do here? Oh, f3 is not working. Yeah, this is losing because of queen c2 and e5. Bishop g3, e4. Yeah, e4. This is what I thought. Okay, fair enough. So bishop e4, I played fe4. Queen b1, there is e5. So I played queen g4. Very bad move. I should have just played queen b1, attacking the... Why queen b1? I should have played queen c2, attacking the e4 pawn. And I thought queen f7 he will mostly play. And then c5. Okay, very hard. But possible. But I played queen g4, knight d7, bishop g5, queen f7, and black is already better. And yeah, kudos to finding queen f5. Very strong move. And here I thought he will go with rook, but ef5 is again strong. And g5 was also strong. f4 happened. h6, rook a8. Rook e2. Okay, f3 was a mistake. He should have just played rook e7 with the idea to play this. Knight e4 tha, knight d7 ko. Oh, what? Oh. इसलिए टैक्टिक्स करना चाहिए भाई. नाइट e4 I didn't consider even considered. h5 there is queen g5, and if bishop e4 there is bishop g5. If knight f6, अरे यार nice. Yeah, knight e4. Oh, you saw it? Yeah, like I didn't even saw like knight e4 is coming. Sadly. Goes to show how important tactics are. Okay, I played this. And this and this and this. And okay, your big mistake was f3. You should have played this. Rook f e1. Probably. No, what is this? Okay, very hard, very hard. The idea is f3. भाई मेरा चेस बेस ऑटोमेटिक लैग क्यों हो जा रहा है भाई? Out of nowhere. चलो नेक्स्ट गेम. चेस बेस लैग हो गया तो नेक्स्ट गेम ना ऑटोमेटिक. चलो भाई बंद हो जा भाई. चलो नेक्स्ट गेम.
The next game was probably the most craziest game of my life, and very special game for me because I managed to beat one of my good friend, Nikhil Dikshit. Beating your friend is something which is good. भाई यार, yeah, against Nikhil, that was probably the craziest game, right? Just a second. भाई सेटअप ऐसा कर दिया है ना अभी मैंने, घर का सेटअप, एक एक्स्ट्रा स्क्रीन है। भाई गिव अवे करेंगे भाई, बस अभी पहले तो निखिल दीक्षित के साथ गेम, एंड फिर लास्ट गेम जो मैं दिखाऊंगा जिससे मेरे को डिप्रेशन आ गया है, तब गिव अवे होगा। Do you do live alone? Basically, the thing is, I have my own place, but my parents live downstairs. Setup tour. निखिल भाई कुछ भी खेलते हैं भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी चालू है भाई निखिल भाई का। निखिल भाई मैं एक तो मैं लेट आया गेम पे, निखिल भाई ने क्लॉक स्टार्ट भी कर दिया था। नो स्पोर्ट्समैनशिप भाई, दोस्तों तो रुकते हैं भाई लोग। तो निखिल भाई को पूछा क्यों किया, निखिल भाई ने बोला आर्बिटर ने किया, लेकिन मेरे को डाउट है कि आर्बिटर ने नहीं किया होगा और निखिल भाई ने किया होगा। ब्रो डू पुशअप्स, भाई मेरे को करना है भाई, फिजिकल फिटनेस की गांड लगी पड़ी है, और टू बी ऑनेस्ट इतना गंदा हो गया है फिजिकल फिटनेस। भामटा निखिल हो ना भाई, खरंच भामटा है। बट फिजिकल फिटनेस इज द टॉप थिंग इन माई लिस्ट नाउ, लिटरली भाई। मैं मैराथन भागता था भाई, समझ रहे तुम गाइस, मैराथन। कभी कभी मैं ऐसे सोता रहता हूँ और अचानक ऐसे उठ जाता हूँ मैं, भाई मैं मैराथन कैसे भागा, ऐसे खुद को नहीं होता। 42 किलोमीटर्स एक पॉइंट पे। गाइस इंस्पिरेशन लो भाई थोड़ा, 42 किलोमीटर्स, समझ रहे हो। अभी 8 kg एक्स्ट्रा है भाई। चेस फ्रीक, हाउ डू यू नो दैट भाई। बट निखिल दीक्षित भाई, निखिल दीक्षित के साथ गेम भाई, निखिल दीक्षित को बुलाओ भाई कोई तो भी, जीत शाह भाई। मैरिज तो नहीं कर रहा भाई मैं जल्दी, मैरिज का पॉइंट ही नहीं लगता मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब अभी तक तो नहीं भाई। चेस नहीं, इमोशनल ट्रॉमा दिया है, फिजिकल ट्रॉमा दिया है, मेंटल ट्रॉमा दिया है, और क्या क्यों चाहिए भाई तुम्हें भाई। अनिरुद्ध वांट्स टू गेट मैरिड सून। अनिरुद्ध काय अरे, कसा आहे रे तू असा
पर भाई निखिल दीक्षित के साथ, भाई निखिल दीक्षित ने स्टार्ट किया गेम जीती। निखिल दीक्षित को बुलाओ भाई कोई तो भी यार। निखिल दीक्षित ने खेला भाई, सो जाओ भाई। G3 D5 BG2 C6 B3। निखिल दीक्षित कुछ भी खेलता है भाई, ओपनिंग ऐसे खेला मेरे को शॉक ही हो गया भाई, ये क्या कर रहा है भाई। बिशप F5 BB2 D3। मेरे को गेम के वक्त हंसी आ रही थी जब निखिल भाई ये खेल रहे थे। निखिल का रिएक्शन नॉर्मल था भाई कि ऐसा क्यों देख रहा है भाई तू, बट ठीक है। नाइट F6 खेला मैं, नाइट D2 बिशप E7। सो निखिल दीक्षित के साथ मेरा गेम था सेकेंड लास्ट गेम 8th। सो मोस्ट क्रिटिकल गेम भाई लाइफ का, लाइक मोस्ट क्रिटिकल गेम है यार। निखिल दीक्षित ने क्या खेला है ये ओपनिंग। E4 बिशप G6 E5। E5 तो सबसे ठीक है भाई। E5 खेला, ये H4 H6 नाइट H3 आइडिया, नाइट F4। भाई टूटॉक्स भाई को कुछ नहीं बोलने का भाई, टूटॉक्स भाई लेजेंड है। क्वीन E2 A5 विद द आइडिया टू प्ले A4 A3 नाइट A6 नाइट F4 बिशप H7 कैसल्स। नाइट F3 चेस फ्लिक जब तू थैली में था टॉक्स। बिशप F8 नाइट H2 क्वीन B6 A4 नाइट B4। एंड ये खेला भाई निखिल दीक्षित ने, अटैक स्टार्ट किया था। क्या बोले भाई, जस्ट एंजॉय करो भाई गेम। मैंने किंग H8 खेला, बट गाइज इधर निखिल का विजन देखो, विजन। गाइस सब जन फोकस करो, ठीक है। निखिल भाई का विजन देखो। मैंने किंग H8 खेला है। किंग H8 का ड्रॉबैक क्या है कि F7 पॉन वीक हो गया, करेक्ट। तो मैंने किंग H8 खेला, मैंने ऐसे ही खेल दिया किंग H8 कि कुछ हुआ तो हुआ। लेकिन निखिल भाई ने रुक E1 खेला। सबसे पहले तो मेरे को हंसी आ गई, ये क्या मूव है भाई, रुक C1। एक तो F का रुक लो, फिर मैंने नाइट खेला है, मैंने नाइट रुक E3 रुक, और फिर रुक आइडिया रुक F3 और फिर F7 पे अटैक। देख रहे हो भाई, रुक लिफ्ट आउट ऑफ, ऐसा रुक लिफ्ट मैंने मेरे जिंदगी में नहीं देखा है भाई। रुक यूजुअली ऐसे H3 पे जाता है, ये कौन सा रुक लिफ्ट था भाई। ये आया, मैंने मारा और फिर आ गया भाई वो रुक, मजाक करते करते मैंने मारा नाइट इधर, नाइट A6 क्या ही खेलता। नाइट H5 बिशप G6 क्वीन E2 नाइट इंटू B4 नाइट F4। तो निखिल चढ़ते जा रहा है और G6 खेलना पड़ा भाई मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये मारा होता तो क्वीन H5 खेला होता, वो अटैकिंग ऑन F7 नाइट आता भाई। मैंने कैसे डिफेंड किया है भाई, ये ज़िंदगी का मेरा बेस्ट डिफेंसिव गेम होगा। G6 भाई, लुक एट दिस पोजीशन भाई, क्या पोजीशन है। बिशप कैसा है भाई मेरा, ये नाइट क्या है भाई, इधर रुक, क्रेजी डिफेंस भाई। H5 निखिल भाई मतलब चढ़ते ही जा रहे, मतलब निखिल भाई मेरे अगेंस्ट ही ऐसा खेलेंगे, सबके अगेंस्ट। नाइट H3 बिशप E7 मैं कर रहा हूँ भाई, डिफेंड कर रहा हूँ। F4 अभी F4 खेला, G4 खेलना पड़ा मेरे को। अभी क्या करूँ भाई, G4 तो खेलना पड़ा, मारा तो रुक, ये
भाई मैं रिजाइन ही कर देता मतलब इसको। सो G4 खेला मैं, नाइट इंटू G4 आया। अभी रुक C8 आइडिया, रुक C2, बिशप A1, फिर मैंने नाइट C2 खेला, बिशप पे अटैक। और निखिल भाई देखो भाई, डर नहीं कुछ नहीं F5 आइडिया, बिशप F5, रुक F5, E5। पता नहीं भी क्या हो रहा है, बट कुछ तो होगा, ऐसे खेल के खेला होगा। मैंने भी नहीं मारा भाई, मतलब क्या कौन मारेगा ये। मैंने नाइट इंटू A1 मारा। अभी इंसान तो रुक इंटू A1 मारते, लेकिन निखिल भाई ने F6, चले चलो चले चलो, बिशप C5 चेक, रुक G8, क्वीन F3। निखिल भाई ने पीस भी नहीं मारा वो कि कुछ तो अटैक करो। फिर मैंने पीस बचा लिया, नाइट C2, नाइट इधर, नाइट D4, पीस आ गया मेरा, और नाइट E2 मारा मैंने, उसने मारा। प्रॉबली बेस्ट मूव होगा रुक G7। मेरे को पता नहीं चल रहा था, लाइक क्वीन मैंने मारा तो नाइट G5 आएगा, और ये मारा मैंने F इंटू G6, किंग H8, नाइट G4 एंड नाइट H6 मेड अनस्टॉपेबल। क्या है भाई ये। भाई सीरियसली क्या, मैं मजाक मजाक में नाइट रुक G7 बोला। मैंने इंजन के साथ चेक नहीं किया है। सो भाई रुक G7 पे क्या खेलता मैं। निखिल से तो ऐसा नहीं हारना है भाई मेरे को। ऐसा हारना तो मौत 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 आ जाए, बट ऐसा मत हारो भाई दोस्त के साथ। मौत इज गुड देन लूजिंग गेम लाइक दिस। अरे भाई भाई भाई, रुक G7। निखिल भाई ने ये मारा, मैंने ये मारा, और निखिल भाई क्वीन G5 खेले। मैंने क्वीन G5 मारा, और निखिल भाई ने नाइट G5 मारा, और नाइट G3 मेट हो गई। लुक हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। मैंने ही मात कर दी भाई। वो मात करने जा रहा था, सब रणगाड़ा वगैरह सब लेके आया था भाई, वो सब आर्मी फोर्ट सब जो नहीं वो लेके आया था भाई, लेकिन मैंने ही मात कर दी भाई। भाई मजा आ गया भाई, सच बोलता हूँ भाई। नाइट G3 मेट। कैसे मेट हो गए भाई, वो आउट ऑफ नोवेयर मेट हो गया भाई वो निखिल भाई। मेरे को हंसी आ गई भाई गेम के वक्त। निखिल भाई सोच रहा था नाइट G5, नाइट F7 आएगा, नाइट G4 ये, और नाइट G3 मेट। निखिल, मैंने नाइट G3 चेक दिया, और निखिल भाई से किंग को हिलाने की कोशिश कर, मेट। भाई निखिल भाई ने पंच नहीं किया, बट निखिल भाई ऐसा बोले भाई ये क्या था भाई, कैसे तूने डिफेंड कर, क्या शॉक ही हो गया निखिल भाई, मतलब मेट ही हो गई भाई, क्या ही बोलेगा वो भाई। लेकिन मैं रुक G7 कब तो भी सोच रहा था कि रुक G7 खेलता तो क्या, लेकिन है क्या रुक G7। मैंने इंजन के साथ चेक नहीं किया ऑलरेडी, बट ये चल रहा है क्या भाई। चलो इमेजिन करो भाई, मैंने नाइट E2 खेलता और निखिल भाई रुक G7 खेलते, मैं क्वीन मारता और निखिल भाई ये खेलते, आइडिया रुक H7 मेट। भाई मैंने रुक G7 फाइंड किया, मतलब कब किया मैंने फाइंड, जब मैं कैब से जा रहा था रिक्शा में ऑन द वे टू होम। रुक G7 पे क्या खेलता, चलना तो नहीं चाहिए बट चल तो रहा है।
और ऐसा हार जाता भाई, क्या हो जाता भाई मेरा चैनल। मेरे को निखिल के नाम पे कर नाइट G4, नाइट इंटू F6 प्रॉबली, G इंटू F6, क्वीन इंटू, नाइट इंटू F6 पे क्या, नाइट इंटू F6 भी मार सकता है यार। G इंटू F, आई थिंक दिस इज द डिफरेंस, नाइट इंटू F6। भाई ये क्या है भाई, चेस बेस। आउट ऑफ नोवेयर हैंग हो रहा है। या अभी रुक G7 देखते हैं इंजन के साथ कि एक्यूरेट है कि नहीं है, बट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से। चेस असिस्ट, व्हाट डू आई रिप्लाई, किसको रिप्लाई करूँ भाई। मैंने गर्लफ्रेंड रखी इसलिए नहीं है कि ये कटकट होती है भाई ज़िंदगी में, रिप्लाई करो वो करो। ये क्या चालू हो गया भाई तुम्हारा इधर यूट्यूब पे, रिप्लाई करो भाई। व्हाट्स द क्वेश्चन, प्लीज़ रिप्लाई। भाई फिर से पूछो भाई एक बार। भाई कैन यू सजेस्ट द बेस्ट एक्टिव फॉर एडवांस प्ले विद एनालिसिस कैलकुलेशन हायर एंड हायर। ड्रोवेस्की की रिकॉग्नाइजिंग ओपोनेंट रिसोर्सेज, वेरी गुड बुक। चलो भाई इंजन के साथ देखते हैं, अभी बहुत हो गया। ये क्या मजाक है भाई। चलो चेस बेस खोलो भाई, इसलिए रखने के भाई चेस बेस। 14 भी रखने का, 15 रखने का, 16 रखने का, 17 रखने का, 18 रखने का। भाई पायरेटेड मत यूज करो भाई चेस बेस। चलो आ गया भाई निखिल का गेम। करो भाई स्टॉक फिश ऑन। Yeah, he is IM too. He also has a channel. Okay, so game started with G3. दिख रहा है इंजन, अरे इंजन नहीं दिख रहा क्या। भाई एक सेकेंड। भैया अच्छा नहीं हो गया।
Yeah, the book name is Finding Opponent Resources by Drovesky. Excellent book. uh, मेरे पास चेसेबल में होगी शायद ये वाली. मस्ट रीड बुक भाई. चेस बुक्स आर यूजुअली एक्सपेंसिव बट completely worth it. So do buy it. ओके चलो भाई रुक G7 देखते हैं भाई. बस एक सेकेंड, खुद से एनालिसिस करके इम्प्रूव होने में मज़ा बहुत है. क्वीन F6, नाइट F6, किंग G7 एंड दिस या एंड आई एम लूजिंग. पीस डाउन है भाई. तो आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड टू चेक दिस थिंग कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ठीक है, OBS ख़त्म हो गया. ठीक है, चलो तो गेम स्टार्ट्स होता है G3 से. G3 D5, BG2 C6, knight G B3 bishop G7, ये knight D2 bishop E7. Oh भाई white is better. निखिल भाई एक्चुअली गोटेड ना. मेरे को लगा निखिल भाई कुछ भी खेल रहे हैं भाई, लेकिन वाइट को बेटर कैसे आ गया 0.64. निखिल भाई सीक्रेटली प्रिपेयर करते हैं क्या? मतलब वो होते हैं ना स्कूल के बच्चे जो टॉप करते लेकिन बोलते पढ़ाई नहीं करते. वे बेटर कैसे आ रहे हैं वाइट को ये पोजीशन? क्या है भाई? मैं गेम का और मेरे को लगा था ये क्या खेल रहा है भाई ये. चेस फ्रीक भाई व्हाट डू यू प्ले अगेंस्ट दिस B3. E5 क्यों नहीं खेला मैंने, मेरे को तो अभी तक नहीं समझ आ रहा. बिशप F5, E6, बिशप B2. मैंने E5 कंसिडर ही नहीं किया. मुझे लगा कि ओके इसलिए यूजुअली नाइट F6 से स्टार्ट करते भाई. सेंटर दिया था लेकिन वो फ्लो में होता है ना कि बिशप F5 खेलो, E6 खेलो, तो वैसे हो गया वो एक्चुअली कि वो स्ट्रक्चर होता है ना नाइट F3, E6, नाइट D7. लेकिन हाँ E5 खेलना तो था, लेकिन इतना बेटर मुझे नहीं लगा था वाइट को होगा. E5 मेरे को गलत लगी थी मूव.
h4 h6 knight h3 आइडिया knight f4. हाँ ना भाई. क्वीन e2 a5 a3 knight a6 knight f4 bishop h7 castles rook e8 knight इधर bishop f8. हाँ ऐसे हिकारू खेलता है यूजुअली, लेकिन वेरी टिपिकल मिडल गेम बट वेरी हार्ड मिडल गेम टू बी ऑनेस्ट. की दोनों के लिए डिफ़िकल्ट है. b5 खेल सकते हैं. मैंने बिशप f8 खेला, नाइट h2 आया, क्वीन b6. क्वीन b6 क्या मूव है भाई, ये क्यों मूव है ये? ओके b5 खेलना होता है ऐसे स्ट्रक्चर्स में. नाइट g4 पे क्वीन b6, क्वीन b6 आया, a4 आया, नाइट b4 आया, रुक c1. अभी मैंने क्वीन पीछे लिया, मेरा आइडिया पुश करना है. और फिर से क्वीन b6. ये क्या है भाई, क्या चालू है भाई? इधर लिया और फिर से क्वीन भी. भाई मैं ये खुद से करूँगा एनालिसिस गाइस. जब मेरे को खुद को समझेगा फिर मैं फिर से स्ट्रीम करूँगा, उसके ऊपर मैं बता दूंगा भाई. अभी के लिए एंजॉय करो भाई. क्वीन d2 किंग h8 रुक e1 नाइट a6. आइडिया b5 खेलना है मुझे. अभी रुक e3 खेले निखिल भाई. बिशप f5 गलत था, नाइट h2 आया और g4 का टेम्पो मिल गया उसे. मारा g4 आ गया फालतू फुकट. g5 आ गया, रुक आ गया. सर मैं 1850 से आ गया, लगभग 3 चल रहा है, मोटिवेशन 0 क्या है? ऑनेस्टली इस पॉइंट पे रेटिंग डजेंट मैटर एट ऑल, क्योंकि K40 में इम्प्रूव करना टिपिकली बहुत ईजी है. यू जस्ट नीड टू हैव 1-2 टूर्नामेंट्स और तुम्हारा रेटिंग फिर से आ जाएगा 200 पॉइंट 300 पॉइंट. मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि गलती क्या हो रही है वो देखो, एनालिसिस करो. क्योंकि थोड़ा सा माइंड शिफ्ट या थोड़ा सा प्ले में शिफ्ट एंड तुम्हारा रेटिंग बहुत बढ़ सकता है. और मोटिवेशन के लिए वही तो करने वाले हैं भाई अपन. वही तो गिव अवे है, वही तो चैनल किया है मैंने. मतलब बेसिकली जो भी डीमोटिवेटेड है वो कमेंट सेक्शन पढ़ के बढ़ सके. तो चेक आउट द चैनल, चेक आउट द वीडियो हाउ टू बीट अ ग्रैंड मास्टर, और वो कमेंट्स पढ़ो. आज गिव अवे है उसका ही, कि जो बेस्ट कमेंट है उसको कोर्स मिल रहा है. सो मैंने ये मारा c/b3, उसने मारा, उसने ये मारा होता तो मैंने ये मारा होता, नाइट b4 आया होता. ठीक है, मैंने cb3 मारा, cb3 नाइट c5 b4 नाइट a6 b4 पे अटैक +3. मज़ा आ गया भाई. लेकिन ऐसा 11 और ने बोला था, द स्वीटेस्ट थिंग इन चेस इज विनिंग द लॉस्ट गेम, एंड द स्वीटेस्ट इज इफ यू आर इवन प्लेइंग अगेंस्ट योर फ्रेंड. सो नाइट h5. भाई मेरे को यहाँ पे ऑनेस्टली g6 खेलने वाला था मैं, लेकिन नाइट f6 ये क्या है भाई? मेरा हाथ ही नहीं खेला. g6 bg6 ही खेल दिया मैंने. क्वीन e2 नाइट, so knight f4 bishop h7 gh6 g6 h5 g5 knight h3 bishop e7 f4 g4. हाँ मैंने सोचा था नाइट g5, लेकिन ठीक है. नाइट इंटू g4 रुक c2 बिशप h2 नाइट c2 f5 पीस मारा, चेक आया, ये आया, क्वीन f3 आया, नाइट आया, नाइट d4 क्वीन f4 नाइट e2 रुक g7 इज द ओनली मूव. क्रेजी.
Rook g4 is the only move, and if I take here, you go knight g5, rook g7, fg7, king g8, knight g4, with the idea to checkmate. And if queen f6, there is e f6, knight f6, knight f6, king g7, and rook f4, bishop d3. ठीक है, लेकिन भाई जीत के मज़ा आ गया भाई. कर्मा कर्मा हिट किया भाई निखिल को. निखिल ने जो क्लॉक स्टार्ट किया. और अभी वी आर गोइंग टू द लास्ट गेम. आई थिंक चेस बेस. अरे यार, निखिल भाई नॉट रियल स्पोर्ट्समैनशिप भाई. चलो भाई लास्ट गेम. भाई ये था भाई लास्ट गेम. व्हाट्स योर रिकॉर्ड? ओवरऑल ऑनेस्टली निखिल इज प्लस अगेंस्ट मी. उसके साथ बहुत बार हारा हूँ भाई मैं. बट ही वुड बी +2 +1. भाई ठीक है, करो भाई निखिल को सेंड करो भाई. एक्चुअली आई वांट समवन टू सेंड हिम. भाई ऐसा करोगे ना भाई, लोग दोस्त मेरे बात करना छोड़ देंगे भाई मेरे से, ऐसा होगा तो. तो भाई ये गेम देखो भाई, ये सबसे भाई ये टॉर्चरस गेम था भाई. पूरा मूड हो गया मेरा. तो बेसिकली क्या होता है चेस में, कभी कभी तुम जीतते हो, कभी कभी तुम हारते हो. वो दैट्स गुड. बट ऐसे गेम हारना इट्स वेरी सैड. और बहुत अच्छे प्लेयर्स को भी होता है. ये गेम देखो भाई, देखो. तो मैं d4 खेला, नाइट f6, c4 d6, नाइट c3 g6, e4 bg7, be2 कैसल, बिशप e3 e5. मेरे को क्या, आपको भी सबको रोना आ जाएगा भाई. c6 नाइट f3, cd नाइट h5. ठीक है. अरे यार लाइव चल ही नहीं रहा क्या मेरा. ठीक है, नाइट h5. हाय अक्षय. सो नाइट h5 खेला मैं. ठीक है, मेरा ओपोनेंट, मैंने नाइट d2 खेला, नाइट f4. अभी बेसिकली वाइट टू प्ले फाइंड अ प्लान फॉर वाइट. लेट्स से हाउ मेनी ऑफ यू कैन फाइंड इट. क्या खेलोगे वाइट टू प्ले? क्या ये ठीक है, वाइट टू प्ले फाइंड अ प्लान फॉर वाइट. तो तुम्हारा टास्क है नाइट f4 के बाद कैसे खेलोगे. अक्षय, डिड यू सॉ द गेम? सर आपने जो बुक बताया है टैक्टिक्स के लिए, उसका पीडीएफ नहीं मिल रहा प्लीज़. ये क्या गरीबी है भाई. भाई ले लो भाई, थोड़ा पैसे जुड़ा के ले लो भाई, बहुत अच्छी बुक है. पीडीएफ भी मिल जाएगा ऑनेस्टली, थोड़ा भी सर्च करोगे तो. लेकिन करो भाई,
मेरे कोच बोलते थे जर्नी टू द ग्रेटनेस शुडंट बी चीप. बिशप F4 इज वेरी बैड. बिशप F4 नहीं खेलना चाहिए. E F4 और बिशप तेरा बिशप G7 का मॉन्स्टर हो जाएगा. या डिड यू प्ले CRG Krishna? Yes, I have played. We have played twice, I guess, and both are draw. Three times we have played. 3 times it's a draw. So, भाई मैंने यहाँ पे आई एम वेरी प्राउड ऑन माई सेल्फ कि आई फाउंड दिस इन रैपिड. It's not easy at all. I just got one answer. The correct move is very anti-intuitive, and I played bishop F1. Idea is G3, and believe it or not, engine का top choice है. So basically, if you have played a good game, it doesn't matter कि ठीक है भाई हार गया भाई क्या क्या हार गया, बट गेम तो अच्छा खेला. नाइट F4 और बिशप F1 टॉप मूव. तो मैंने बिशप F1 खेला, मेरा ओपोनेंट F5 खेला, G3 नाइट इधर, और यहाँ पे मर गया भाई पॉन. ऐसे ही मर गया पॉन. बिशप से मारता तो G4 आता है, रुक से मारा तो भी G4 आ रहा है, G F6 मारा तो क्वीन H5 आ रहा है. सो नाइट F6 आया, मैंने ये मारा. भरत कुमाल, आई थिंक आई हैव प्लेड. नाइट G4 आया, मारा क्वीन E2, ये मारा नाइट B4 रुक C1. सो 3 फकिंग पॉन अप्स अब भाई. बिशप G2 क्वीन A6. बहुत बुरा लगा भाई ये गेम, मतलब क्या बोलो भाई. क्वीन D8 आया, कैसल, और ये हार गया भाई मेरे पास 3 पॉन्स अप. रुक E1, क्वीन E3, A6, और अभी क्वीन B6. आइडिया B7 पे मर रहा है और नाइट D6 आ रहा है, तो उसने नाइट E8 खेला, डिफेंड किया D6 का पॉन. मैंने नाइट A4 खेला. भाई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. रुक इनटू C1 ऑलरेडी इन अ पेन, कम करो भाई थोड़ा बहुत. बिशप इनटू H7, क्वीन E3, नाइट F6, क्वीन F6, क्वीन E2, E4. भाई वो प्लेलिस्ट देख लो भाई. बेस्ट एडवाइस टू 1600 पंप. भाई मॉड कोई तो भी प्लेलिस्ट दे दो भाई. इतनी अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है भाई मैंने. हाउ टू बिकम 2600. रुक D1, बिशप G6, नाइट C4, बिशप यहाँ पे, और G4. भाई यार ये नाइट F5, बिशप E5, नाइट G3, बिशप E. वेरी सैड भाई. चलो गाइस, तुम्हारे पास 10 सेकेंड है. क्वीन F4 योर टर्न, क्या खेलोगे? आफ्टर क्वीन F4 योर टर्न. You have 10 seconds on the clock. Everyone make a move.
भाई रिजाइन मत करो भाई, वाइट इज बेटर। आकाश सेज नाइट G3, चेस एसिस्ट सेज क्वीन B7। भाई तुम्हें डर नहीं लगता क्या कुछ, क्वीन H2 मर रहा है भाई? तुम्हें क्या डर वगैरह नहीं है क्या कुछ, क्वीन H2 मर रहा है भाई? थोड़ा तो शर्म करो। क्वीन B7, क्वीन D2, ये क्या मूव है भाई? लेकिन एक्चुअली तुम्हारे मूव मेरे से एटलीस्ट अच्छे है। कितना सैड है भाई, अभी तक जिन्होंने भी मूव्स बोला है सब मैंने जो खेला उससे अच्छे है। रुक F1 इज द टॉप इंजन मूव फ्रॉम लास्ट। भाई एक जन ने भी ये मुंह नहीं बोला यार, कितना बुरा है। चेस फ्रीक ने बोल दिया भाई, चेस फ्रीक तू ही भाई मेरा भाई। मैंने H3 खेला भाई, H3 इज इमीडिएट लूजिंग, वेरी बैड मूव, यू न्यू इट या। लुक्स लॉजिकल। करेक्ट मूव इज नाइट G3। मेरे को लगा ये मार देगा, ये वाइट इज बेटर। भाई मतलब टाइम बहुत कम था एट दिस पॉइंट, बट ठीक है मेरी ही गलती है। यू शुड नॉट गिव द रीज़न कि टाइम बहुत कम था। बेसिकली इट्स लाइक ड्राइविंग ड्रंक एंड टेलिंग आई वॉज ड्रंक आफ्टर एक्सीडेंट। क्या बोला ना मैं? if you are driving drunk you will get into accident, there is no point complaining. So same thing, time कम था, ये reason is almost similar to driving line। ये हुआ और queen G3 met, हार गया भाई मैं। हाँ भाई आई मीन इट वॉज फास्ट बट लाइक कुछ भी खेल रहा था भाई मेरा ओपोनेंट। ये क्या है यार, मतलब सबसे पहले तो ये फाइंड करने में मेरे को बहुत टाइम चला गया। नाइट F4 बिशप F1 के वजह से इधर मेरे 3 मिनट चले गए। ठीक है मैंने फाइंड किया और ये पॉन मिल गया मेरे को। मेरे को लगा मैं मैनेज कर लूँगा, लाइक आई हैव वॉन सो मेनी टूर्नामेंट्स लाइक दिस, बट ये वाला ये पोजीशन आई विल नेवर लूज इन क्लासिकल चेस, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लूज। हाँ भाई वही करना चाहिए था, 3-4 रिपीटेशन क्लेम करने का आउट ऑफ नो टाइम। ठीक है इंजन के साथ देखते हैं व्हाट एल्स। इन ऑफ कोर्स भाई इन क्लासिकल चेस ओपोनेंट विल रिजाइन दिस। भाई तो वही तो स्ट्रैटेजी है भाई उसका, बेसिकली वो फास्ट खेलता है। बट ठीक है मतलब वेरी ट्रिकी प्लेयर। मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब है उसके अगेंस्ट, प्रॉबेबली वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स जिसके अगेंस्ट ख़राब है मेरा रिजल्ट अभी तक। आई थिंक प्रोजेक्ट इज़ इंद्रजीत। नहीं भाई प्रोजेक्ट की लाइक उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। FG6 क्वीन E2 और इंद्रजीत को अल्ट अकाउंट बनाना भी नहीं आएगा। क्वीन D टुक C1 +3 भाई, A3 +4
ये ड्रॉ भी हो जाता तो भी आई वुड हैव क्राइड। यहाँ पे मैं मार सकता था। ठीक है, मतलब एक्यूरेट तो खेल रहा हूँ मैं, इट्स नॉट दैट बैड। बट ठीक है, टाइम। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता था ऑफ कोर्स क्वीन E3 को, लेकिन ऑफ कोर्स लास्ट राउंड है तो जीतना तो पड़ेगा। और यहाँ पे नाइट G3 वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वीन F2 चेकिंग है। भाई एक सीनियर सिटीजन ने चीटिंग करने का ट्राई किया, या ऑलवेज टेक द एक्शंस भाई। अरे यार रुक, F1 क्रेजी। इफ H3 क्वीन G3, मैंने यही देखा, बिशप G3 H3 और ये, इसलिए मैंने H3 खेला। क्वीन B7 इज ऑल्सो टॉप, वन ऑफ द टॉप मूव। भाई निखिल दीक्षित इज हियर। निखिल दीक्षित is one of the most nicest guy. Super sportsman. निखिल सर की बहुत तारीफ हो गई भाई आज के दिन। H3 बिशप एंड D और क्वीन G3 और मेट हो गया भाई। वेरी सैड भाई, बट ठीक है, गिव अवे करते हैं भाई कंप्लीट। लेट्स गो एज प्रॉमिस्ड। यस भाई, ग्रेट स्पोर्ट्समैन। भाई नको बघू भाई व्हिडिओ। निखिल भाई इट्स ऑल फन भाई, यू नो दैट राइट। निखिल भाई ने मुझे बोला था वो सोने जा रहे हैं भाई। निखिल भाई को मैंने स्ट्रीम पे भी बुलाया था, लेकिन निखिल भाई टायर्ड बहुत है भाई। भाई चलो, कौन सा वीडियो था? हाउ टू निखिल भाई छुपे रुस्तम है। भाई ये इंट्रो कैसा लगा भाई? भाई निखिल भाई को कोई गालियां मत दो भाई, ऑफ कोर्स अच्छा दोस्त है मेरा वो, लेकिन दो एक्चुअली ऑनेस्टली दो भाई गालियां निखिल भाई को। भाई सच में क्रेजी है क्या भाई इंट्रो? भाई मैंने खुद ने बनाया भाई, किसी एडिटर ने वगैरह नहीं बनाया भाई। कैपकट का मस्त टेम्पलेट उठाया मैंने और बना दिया भाई मैंने। चलो तो सबसे पहले देखते हैं भाई। तो मैंने निरंजन से भी पूछा उसके क्या है टॉप 3, तो निरंजन भाई के थे, एक सेकेंड चेक करता हूँ। भाई चैट जीपीटी वाले सबसे पहले डिलीट कर दो भाई।
बाय 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 बाय, बहुत ज़्यादा नहीं आए। लेकिन मैं इसको, क्या नाम है, निरंजन भाई को बोलूँगा कि एटलीस्ट 3 कोर्सेज गिफ्ट करे इंस्टेड ऑफ। सो निरंजन भाई का सबसे पहले है मनप्रीत चेस का, उसके बाद है स्क्विरल, उसके बाद है डेयर डेविल। ठीक है, मनप्रीत चेस सबसे पहले। हाय सुयोग, आई लव योर कंटेंट, especially analyzing game, improving the data. It feels raw and real. Thanks for helping, honest, asking for your guest. Coming to the questions, भाई इसको bonus point भाई, love your content. I am a chess player and coach. I have seen friends and students struggle when the result don't match expectation. Very true, right? One thing that always stayed with me is the scene. आपको दिख रहा है ना guys? क्या बहुत छोटा हो रहा है? नहीं, ठीक है। Stayed with me is the scene from MS Dhoni movie about facing different bowlers. One bad over doesn't mean the game is over. You wait, you adapt, you take on the bowler that suits your style. One bad over doesn't mean the game is over. One bad round doesn't mean the game is over. You wait, you adapt, and you take on the bowler that suits your style. When it's tough, you defend, and when the moment comes, you take the charge and go big. The key is simple as, भाई ये बड़ा कैसे करो, एक सेकेंड। ठीक है, the key is simple, as long as you stay at the crease, the scoreboard keeps moving. That mindset helped me days I won't feel like anything. I share the same people who feel low. Get up, show and get a result. Very good advice. ठीक है, the quote that helps me through this is, winning isn't all that, neither is losing. It's something that happens, it's the outcome, but what matters is the input and journey. Freaky Rahul, there you go. Lost my game and was sitting at a logo feeling like shit. Rippling my head, you passed by and just asked what happened. Such a mark gets shade differently, instantly feel lighter. Honestly, maybe the best way to someone went down, just be there and ask people remember this stuff more. And bye 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 bye. Freaky Rahul, रुला दोगे क्या भाई? When someone feels down, I remember them like his chess. Something you sometime, भाई ये सबसे easy होता है give ये करना. Like ये होगा तो chat GPT है. Sometimes you lose a queen, but the game is not over unless you actually press resign. भाई ये सब easy way to use chat GPT is like, ये delete कर दो भाई, ये जो होता है. When someone feels down, I would remind them that even the darkest nights end with sunrise. Feeling low doesn't mean you're falling, it means you're fighting. I remember you're stronger. ठीक है, not bad. निखिल भाई जाऊन व्हिडिओ बघितला, फेकन फेकाई ओपी भाई. क्लॉक तर स्टार्ट झालं भाई. मी असतो तर मी बोललो असतो भाई आर्बिटरला की आलाच आहे भाई, आलाच आहे, कशाला स्टार्ट करताय. Guys, subscribe to Nikhil's channel. Failure doesn't mean you're not capable. It shows you need to improve. Every person who is added. भाई ठीक है ना भाई, कंटेंट इंपॉर्टेंट असतं. मोर टाइम्स दॅन यू सी, दिस इज द एंड. इट्स फीडबॅक, लर्न फ्रॉम इट, ॲडजस्ट अँड गो अगेन. इफ यू क्विट नाव, दिस फेलियर डिफाइन्स you. If you continue, it's just a step. Failure doesn't mean you're not capable. Nikhil bhai, do you understand this? You have lost this game, but it doesn't mean you're not capable. It shows you need to improve. Every person who is ahead has failed more times than you see. By chat GPT, but not.
लाइक रॉकी सेड, ये प्रोजेक्ट भाई है क्या आपने? Project 102, let's go भाई. Like Rocky said, you can't hit as hard as life. It's very mean and nasty. हो रुक G7 ॲक्च्युली व्हेरी नाईस ना. मी कॅबमध्ये जाताना विचार केला रुक G7. हां आणि ओपनिंग पण भारी आहे. बट E5 खेळायचं होतं मला. इट विल ओके रॉकी भाई, लाइक रॉकी सेड, रॉकी का कोट ही इसने डाल दिया. यू कैंट हिट एज हार्ड एज लाइफ. It's a very mean and nasty place and it will beat you down to your knees and keep you there permanently if you let it. But it ain't about hard you hit, it's all get and move forward. How can you keep that pushing forward? Now if you know what you are worth, go out and get your word. But don't point fingers saying you lost because of him or her or this or that, because cows do that and that ain't you. You are better than that. Oh bye. अरे शांतानु भाई, हाउ आर यू डूइंग? Why do we fall? So we can learn to pick ourselves. Okay, very quick. Dale Devil, watching this video stagnated when a 1600. यही है कि आपने 1600 पे जो स्ट्रगल कर रहे थे. I remember staring at my screen frequently, burn unconvinced that I hit my ceiling. I was genuinely ready to walk away from chess at 1600. 1600 पे तो रेटिंग खुलती है भाई. ये क्या है भाई इतना स्ट्रेस? इन दैट मोमेंट ऑफ डिफीट माई फादर सैट विथ मी एंड सेड, ये चैट जीपीटी क्यों लग रहा है? द वैल्यू ऑफ जर्नी इजंट फाउंड इन द पिक्स बट इन द डेज यू शो अप इवन यू डोंट मास्टर. हिज वर्क ग्राउंडेड मी मच लाइक नियर पीरियड ऑफ द कार लाइट्स अप्रोच. When you are going, let's say there are no street lights, but you at least have car lights. It means you will see what is immediately in front of you and you will keep going. And that is actually enough for you to reach Pune. It's not necessary that there should be street lights everywhere. So this is the approach where I see, is any of my piece hanging or is there anything that's deserving attention? If not, then I make the most of this one. This is what I call the car lights approach. So I just did that. I wanted to create some chances, and the way to create chances was to create a passer. So I just took this and played C5. Oh wow, you gave out the pressure. Okay, bhai, car light approach is very important. He's working on car light approach. I didn't need to see the end of the road. I just need to focus on next moment. The video is such a vital reminder that the most accomplishment players go through this same phases out road. Yeah, actually it does. You know, when I was trying to reach till IM, and it was a lot of struggle, so what I did was just focused what was in front of me, and it really helped me. Thank you for bringing the gap between technical training and mental reference required to keep the playing. For anyone feeling down today, just remember you don't have to see the whole staircase. Thus skip the first step, keep showing up. Very nicely written. Love this. If anyone in motivation to continue working hard at themselves on chess, I would tell them the following lines. If you have it within you, whatever it takes to reach your goal, come to my friend. मला वाटलं अरे झालं ना भाई, गेम ॲनालिसिस केले, पझल्स केले आणि आता शेवटी फक्त गिव्ह अवे करतोय. बाय द वे माझी स्टोरीचं पझल सॉल्व्ह केलं इन्स्टाच्या. आय वुड आस्क हिम हाऊ वी डिफेन्स फील. आय वुड चॅलेंज द डेफिनेशन. वाव, the French book, the vital which sounds how failures keeps you down are often the first steps. Using examples such as at each one has gone through. Okay, fine. By you are very great, good connector. So my answer for the question is no pain, no gain. AMD by I'm student of, so just spamming all the wisdom I learned. Whatever you make feel by linking by no efforts by AMD. काय आन्सर आहे निखिल, काय आन्सर आहे? भाई नो पेन नो वेन को विनर करते क्या भाई? मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ये दिस टू शाल पास.
माझं पझल बघून. Hi, I love your content. As a chess player, my I can have lost so many times, but one line for which I heard is from a person who is very dear to me. Not every game is meant to be won. Some are meant to teach. This kind of help me on the board is not very in favor, but some days meant to make you understand what life is. Great session, so many practical tips. भाई बहुत आंसर्स आ गए भाई, ये पढ़ पढ़ के. भैया प्लीज मेक अ वीडियो, गिव मी कोर्स. I came here when I got the notification. Should we give this as a winner, bhai? Nice video. Sir, when you come live, I miss the live stream. दीपक भाई क्या कर रहे हो भाई तुम? मैं लाइव हूँ भाई. ओके ठीक है, मतलब मैं इसका बताता हूँ. निरंजन भाई को सबसे तो ये अच्छा लगे मनप्रीत चेस का. मनप्रीत चेस ठीक है. दूसरा है स्क्विरल. स्क्विरल ओके. एंड थर्ड वन इज डेल डेविल. हाँ डेल डेविल का मुझे अच्छा भी लगा था एक्चुअली. But I have to choose between these three: Daredevil, Squirrel या मनप्रीत. ऑनेस्टली किसी ने मोटिवेट तो नहीं किया है भाई ऐसा, मतलब मेरे को तो मोटिवेट इससे ही हो गया. दिस टू शैल पास, ऑनेस्टली स्पीकिंग. भाई के एक ही सब्सक्राइबर है भाई. भाई मेरे ख्याल से नहीं, इसको दे दो भाई. ओके चल चैट जीपीटी से ही पूछते हैं क्या बोलो अभी. निखिल की आइडिया मस्त है भाई. ये निखिल जो बिजनेस माइंडेड है ना, उतना उसने चेस में लगाया होता तो निखिल भाई इजीली मतलब करोड़पति होते. क्या क्या टापना है, क्या प्रॉम्प्ट क्या देना है कि प्रॉम्प्ट भी डालो. सिलेक्शन. अरे किधर गया भाई. फ्री की लाहौर. डेल डेविल सेकंड. भाई एक्चुअली भाई फ्री की राहुल आई नो हिम.
भाई लेकिन एक्चुअली अच्छा है ऑनेस्टली, मे बी दे आर डाउन जस्ट आस्क। लेकिन फ्री के राउंड ने किया है चैट जीपीटी यूज़ यहाँ पे, बट ठीक है एक्चुअली अच्छा है। प्रोजेक्ट भाई को भाई मैंने क्या क्या ये सर्च किया है भाई, अर्निंग विथ 2.2 के। क्लाउडला पण विचारता येतं का? नहीं भाई सॉरी भाई, फ्री की राहुल ने तो किया नहीं है चैट जीपीटी यूज, मोस्ट ह्यूमन पिक आ रहा है, मोस्ट सिनेमैटिक पिक को आ रहा है प्रोजेक्ट भाई, और लास्ट में क्लाउड। हाँ भाई ओस्मानी भाई। भाई निरंजन ने गलती से ये वीडियो देख लिया भाई। भाई फ्री की राहुल ही आ रहा है भाई अपेरेंटली, फ्री के राहुल को डिक्लेयर कर दो भाई, फ्री के राहुल लेट्स गो। बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी ट्रू स्टोरी। तो ये दिल्ली में हुआ था मेरा, जब मेरा सेकेंड लास्ट राउंड हुआ था, तो फ्रीकी राहुल वॉज सिटिंग काइंड ऑफ वेरी सैड ऑन द स्टेयर्स, and while going to the washroom I was passing by as he said, and I just asked him like what happened, क्या हो गया। एंड ऑनेस्टली मैं जब जा रहा था जस्ट मैंने पूछ लिया, यूजुअली ड्यूरिंग टूर्नामेंट आई डोंट टेंड टू इंटरफेयर, बट मैंने पूछ लिया था एंड इट रियली हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हिम। एंड just be there and ask, people remember, and it's a very nice advice कि honestly maybe the best way to someone when they are down is just be there and ask। यूजुअली हम नहीं पूछते भाई, वेन एवर समवन इज डाउन वी ट्राई टू इग्नोर देम कि ठीक है देख लेंगे। पीपल रिमेंबर दिस स्टफ मोर देन विंस, रिस्पेक्ट फॉर रियल, करेक्ट। लेट्स गो फ्रीकी भाई, फ्रीकी भाई डिजर्व्स टू बी मॉड। managing, so freaky bhai get in contact with me on my email Suyog Wagh 64 और on my Insta, आपको बस आगे की प्रोसेस हो जाएगा। ये आइडिया मस्त है भाई, लेकिन फ्रीकी भाई इट्स वेरी रिलेटेबल हो गया भाई, ज़्यादा ही हो गया वो रिलेटेबल, और सब एआई ने भाई, तीनों एआई ने फ्रीकी भाई को भी दे दिया। निरंजन भाई का नहीं था बट ठीक है, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। प्रोजेक्ट भाई का भी अच्छा था बट ठीक है भाई, प्रोजेक्ट भाई बुरा मत मानो भाई, भाई थोड़ा पर्सनल कमेंट करता हूँ ना। ठीक है चलो भाई, दैट्स द विनर गाइज, होप यू एंजॉयड एंड लेट्स स्टॉप द स्ट्रीम नाउ। क्या बोले भाई? हाँ राहुल भाई विल डेफिनेटली यूज़ दिस रिसोर्स एक्चुअली, क्योंकि ही इज़ रियली हार्ड वर्कर। मतलब जब मैंने बात की उनके साथ, तो राहुल भाई देखोगे ना भाई कोर्स वगैरह अच्छे से।
प्रखार राहुल भाई का कुछ तो अलग ही चालू है भाई. राहुल भाई जीत गए, इधर हमारा चालू है यूज़ करेगा नहीं करेगा. इतना अच्छा कम राहुल भाई का अलग ही. आपने किसके साथ प्रखार त्रिपाठी के साथ पता नहीं भाई ऑनेस्टली भाई. पर्सनल चलो लेट्स गो भाई, लेट्स गो फ्री की राहुल देन. ठीक है, गेट कॉन्टैक्ट इंस्टा पे या ईमेल पे हम प्रोसेस कर देंगे फ्रॉम चेसेबल. इट्स अ वेरी गुड कोर्स बाय द वे, वेरी गुड कोर्स. और निरंजन का फर्स्ट कोर्स है तो इट्स इवन बेटर. लाइक फर्स्ट कोर्स यूजुअली ट्राई टू डू इट वेरी गुड. चलो फैंटास्टिक भाई. नेक्स्ट हमारा आपका मोस्टली मुंबई GM अबाउट 2400. दैट इज गोइंग टू बी माई सीरियस इवेंट. सो वही खेलूँगा मैं, मुंबई किट अभी के लिए तो. चलो गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. टुमारो आई विल मोस्टली stream title Tuesday at around 8:30 p.m. Hopefully Proctor doesn't misbehave, but ठीक है, that was it. चलो मिलते हैं फिर. गुड नाइट एवरीवन. थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग एंड होप यू एंजॉयड. ओके, गुड नाइट भाई, बाय. चलो नाइस, मैं भी मुंबई आ रहा हूँ. मिलते हैं प्रोजेक्ट भाई जल्दी ही. चलो बाय.